Okay, so hello everyone, good evening, and welcome to the session of Finance Current Affairs. Could you please confirm that everything is fine with my audio and video? Okay, I believe everything is fine. Let's just move ahead with the discussion of the newses. Okay, so in this case, we have 4 to 5 news with us. The first three are IMF reports. Okay, these IMF reports are very important. So we are going to just cover the key highlights of this report. We will not go too much in detail. So that is the reason I have included all these three reports in one single place. Okay, so there's IMF reports. All three are IMF reports, and then we have two newses with regards to SEBI. Okay, so let's just discuss them one by one. So first one is World Economic Outlook. This is a report which is being released by the IMF. The theme of this report this year, that is April 2026, is Global Economy in the Shadow of War. So as per this economic outlook, they have given a GDP. They have given a GDP estimate for the year 2025, 2026 and 2027 for the world output. That is the world GDP. So that is in 2025 it was 3.4, in 2026 it is 3.1, and in 2027 it is 2.7. So let's just write it like this: world output for financial year 25, because this one is small, so I'm rewriting that again so that you have clarity with the numbers. It's 3.4, 3.1 and 3.2. So these two are uh, financial year 27 one is the estimates, okay, projection that they have made for the upcoming period. And then for the India's GDP, they have made some projection for the financial year 25. They said the GDP was 7.6%. For the 2026, 6.5 is estimated, and 2027, 6.5 is again estimated. So you have to remember the estimated one, which is being stated by World Economic Report. Okay, let's just move ahead. So based on different kind of authorities or international institutions such as Asian Development Bank, World Bank, Reserve Bank of India and IMF, they all have given their own respective growth outlook for India. So we need to remember their GDP forecast for the financial year 27 based on their estimates. So ADB estimates 6.9%, World Bank estimates 6.6%, RBI estimates 6.6 to 6.9 percentage, and IMF said that 6.5%, which we have just read. So you must have this kind of outlook in your mind, that which institution have forecasted what percentage of growth for India for financial year 27. Right, these projections can be directly asked in your number, we can say 1 mark question in the phase 1. Okay, so let's just read throughout that what exactly they are talking about. So basically they are saying for the financial year 27, we are saying that your growth, your economic growth is going to reach 6.5%. Now there are certain reasons, right? The first one is the trade de-escalation with the US. As the US have reduced their import tariffs on Indian goods by 50 to 10%. Now that is a very relaxed and better way, as it has revived the export competitiveness in the labor intensive sectors like textiles and jewelry. And that is the reason that this has helped, or we can say these are the drivers that have helped in increasing our growth. This is despite the global backdrop. Even if there is a war-like situation, our economic outlook good, growth look good. Carry over momentum. That is, India has achieved 7.6% growth in the financial year 26, providing the massive statistical operational head start for the current year. So we have already performed well as per this, and now we are, estimating that we are going to move ahead as well. Internal demand, the internal demand, that is the consumers demand, are still growing, and that is the reason that India's growth is being anchored by the robust domestic consumption, because people have confidence over the economy, that yes, we are not expecting our economy to go on a downfall roadmap, and it is worthful investing in. So their consumption is high, their investment rate is high, right?
Let's just move ahead. So in this world economic growth, world economic outlook, they have said कि जो हमारा इंडिया है जो पहले फोर्थ पोजीशन पे था, now it has reached to सिक्स्थ पोजीशन. तो इसके कुछ रीजंस हैं that why we have slipped from position of fourth to the sixth position. ठीक है, तो उसके इन्होंने कुछ रीजंस दिए. तो as per this you have to remember that now we are the sixth largest economy because of the because of the because of the these reasons, that is currency depreciation, dollar denominated GDP. Could you please wait for a moment? I'm really sorry, there was a very important call, I have to take it in between. Okay, so again sorry for the disruption. Yes, so we were talking that why the India slipped from a fourth position to the sixth position. First of the reason is the GDP calculation. So we have revised our GDP base rate, और उस बेस रेट की वजह से हमारी जो इकोनॉमी का साइज है, इट हैज रीच टू अ स्मॉलर साइज, उसका साइज थोड़ा स्मॉल हो गया है. एंड सेकेंड थिंग इज depreciation of our currency, because the GDP calculation is being ultimately done by the IMF in dollar terms. तो जब हमने INR की प्रोडक्शन को, GDP को जो हमारी INR में है, उसको जब हमने डॉलर्स में कन्वर्ट किया, it comes out to be smaller. So that is the two reasons that why we are now a sixth largest economy, right? So that was currency depreciation and the second was dollar denominated GDP, right? So अभी currently हमारी approximately कितनी है in dollars term, कितना साइज है हमारी इकोनॉमी का? It's 4.15 trillion approximately. So this is what you need to remember. Okay, then becomes statistical revision because of the GDP base year, right? All three are the reason that why we have slipped from sixth to fourth to sixth position, right? Now the fiscal monitor, this is again one of the report of the IMF. इसमें हम बात करते हैं डेट की, पब्लिक डेट की और वर्ल्ड डेट की, राइट? जितना हमारा डेट ज्यादा होगा, दैट इज गोइंग टू शो दैट व्हाट इज आवर फिजिकल पोजीशन. जो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है उसके हिसाब से हमारा फिजिकल पोजीशन क्या है. सो दिस रिपोर्ट टेल्स द राइजिंग ग्लोबल पब्लिक डेट. तो क्या बता रही है रिपोर्ट? दैट देयर इज अ more and more public debt that is being taken by the government in each and every country, and it is becoming one of the defining macroeconomic challenge of this decade. For this decade, this is one of the macroeconomic challenge that we have to dealt with. So इस बार की हमारी जो ये जो रिपोर्ट है, इसकी थीम क्या है? फिस्कल पॉलिसी अंडर प्रेशर, हाई डेट, राइजिंग रिस्क. सो यू विल रिमेंबर द थीम सो दैट इफ दे आस्क यू विल बी एबल टू आंसर इट. ठीक है, दिस रिपोर्ट इज रिलीज ट्वाइस अ ईयर एंड हेंस इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, आईएमएफ के हम जो फिजिकल मॉनिटर पढ़ेंगे, वी विल बी जजिंग दैट बेस्ड ऑन थ्री बेसिक लेयर्स. सो फर्स्ट इज एट द ग्लोबल लेवल डिस्कस करेंगे, फिर एट द डेवलप्ड इकोनॉमी एंड चाइना जो कि एक और डेवलपिंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड देन वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, एंड व्हाट आर द वेज दैट वी कैन इंप्रूव आवर इंडियन इकोनॉमीज डेट एज वेल. ठीक है, ग्लोबल पिक्चर देखें अगर हम, तो डेट लेवल्स एट द ग्लोबल लेवल, ये आपको याद रखने हैं डेटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड. सो ग्लोबल ग्रॉस पब्लिक डेट इज 94% ऑफ द जीडीपी. तो एज ऑफ 2025 94% ऑफ द जीडीपी, 94% ऑफ द जीडीपी क्या है हमारा? ग्लोबल डेट है, ग्लोबल पब्लिक डेट है. ठीक है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू रीच 100% बाय 2029. What is the interpretation of this? Interpretation is that whatever you are producing, whatever GDP is being, we can say the gross domestic production is of the world, that entire is being given as a debt. वो एक तरह की liability है जो debt है, debt में जाएगी, debt repayment में जाएगी,
This is what they want to say, and this has been seen after World War II. So interest burden is rising from 2% to 3%. अब ये कैसे देखा इन्होंने, ग्लोबल जीडीपी के अकॉर्डिंग देखा है that if we accumulate all the government burden of interest, so this has been risen from 2% to 3% of the global GDP. तो ये increase हुआ है. इसके दो reasons दिए हैं इन्होंने that why they have increased. First is that because उन्होंने ज्यादा higher rate पे लोन लिया है. Why? Because they have refinanced their loan. Many of the countries have refinanced it, and because of which the interest rates are now increasing day by day. ठीक है, और interest payment अब इनकी बढ़ चुकी है. Geopolitical overlay, and because there is a West Asian crisis, there is something a war-like situation at that particular area. तो अब जो energy prices हैं, एनर्जी प्राइसेस हैं, यानी कि एनर्जी गुड्स के जो प्राइसेस हैं, दे आर ऑलरेडी हाई. सो गवर्नमेंट्स एंड कंट्रीज आर टेकिंग लोन इन ऑर्डर टू पे ऑफ दैट बिल बिकॉज दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. तो उसकी वजह से भी हमारे क्या ग्लोबल डेट इंक्रीज हो रहे हैं, राइट. सो दीज आर द मेन रीजंस. द फर्स्ट वन इज 94% ऑफ द जीडीपी वी हैव ग्लोबल डेट. It is expected to rise 100% by 2029, and interest burden has been risen from 2% to 3%. Why? Because of refinancing and high interest rate. And then lastly, geopolitical tension, and that is making energy goods very expensive for the countries to buy, and hence they are taking too much loans. Then comes US picture, because US is one of the dominated current country, and we have to understand their view as well. तो अगर हम उनके डेफिसिट की बात करें, डेफिसिट मतलब कि that they are over expenditure जो कर रहे हैं as compared to their own revenues, receipts, right? तो वो कितना है, that is 7 to 8% of the GDP, of their own GDP, not world GDP. ठीक है, तो this is they are saying the structurally higher than 50-year average of 3.8%. तो इनका अगर पिछले 50 years में average निकाला जाए, this was 3.8% around, but this has been very much higher than as we compare it with the previous years average as well. So this is a very important point for the US. Then projection क्या है, that it may rise or it may come to 6% by 2036. तो 2036 में इससे प्रोजेक्ट किया जा रहा है that it will reach to this particular area, right? डेट कितना होगा, डेट इज करंटली 142% ऑफ द जीडीपी बाय 2031. तो हम कहेंगे द यूएस विच इज वन ऑफ द डोमिनेटेड कंट्री, दे हैव टू मच डेट विद देमसेल्व्स. They have too much debt with themselves. They are the one who is having the highest debt in the among the countries. China की बात करें, they have a deficit of 8%, and debt rising कितना है 127%. By 2031 they are expecting it, right? Same is with the US, that by 2031 they are expecting 142% of the GDP. Again दोनों की recommendations क्या थी IMF से? So IMF को ने ये recommendation दी that they have to work on the government spending, they have to increase their taxes, and hence they have to have a targeted subsidies दें. ऐसे नहीं कि आपने overall nationwide subsidies दे रहे हैं, बांट रहे हैं. This is not going to be done. You have to have a targeted subsidies, वो भी कम टाइम के लिए, एक limited टाइम के लिए. And here comes the India's overlook. So it says that outlook is 77.7% by 2031 expected है इन इंडिया. अभी करंटली कितना है 84% ऑफ द जीडीपी. हमारी जितना भी जीडीपी है उसमें से 24% इट इज बीइंग ऑलरेडी डेट ऑफ द गवर्नमेंट. डेफिसिट कितना है, डेफिसिट 7.4 से 6.6 फॉल करना एक्सपेक्ट कर रहा है बाय 2031. सो इट इज अ गुड पॉइंट, बट वी हैव टू मेक इट इवन मोर लेस देन दिस. चैलेंजेस क्या है हमारे आगे, दैट वी हैव अ लॉट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट. वी हैव टू फोकस ऑन द रिसीट्स. और हम रिसीट्स किस तरह से बढ़ा सकते हैं, आइदर वी शुड इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स और वी शुड इंक्रीज आवर टैक्सेस. दीज आर द टू वे थ्रू विच वी कैन इंक्रीज आवर रेवेन्यू. वी आर करंटली रिलाइंग ऑन द फॉरेन सेविंग्स. हमारे जो फॉरेन सेविंग्स आते हैं, रेमिटेंसेस आते हैं, वी आर रिलाइंग ऑन दैट. ठीक है, अगर वो भी आनी बंद हो गई तो करंट अकाउंट डेफिसिट और भी ज्यादा ब्रॉडन अप हो जाएगा. Capital outflow, and because there is a lot of, we can say, foreign investors who are taking out their capital from India and they are investing in their home countries, and that is creating a lot of pressure on Indian stock market plus on the Indian currency as well. So again, that is a very challenging point that where we need to focus on. Then come faster fiscal consolidation would free the domestic savings for private investment, lower borrowing cost, and create the policy space for crisis.
सो व्हाट दे आर सेइंग दैट अगर गवर्नमेंट डेट लेती है, एक हम जनरल व्यू लेके चलते हैं, इफ द गवर्नमेंट इज टेकिंग अ डेट, दे आर टेकिंग लोन, तो वो लोन कहां से लिया है उन्होंने? बैंक से लिया। और बैंक के पास पैसा कहां से आया? दिस इज इंडिविजुअल्स मनी, देयर डिपॉजिटेड मनी इज बीइंग kept with the bank, and ultimately what government are doing, government are taking up the savings which are being made by the domestic people, ठीक है, उनकी सेविंग्स का यूज करके दे आर टेकिंग द लोन फ्रॉम द बैंक। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है दैट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर जो प्राइवेट प्लेयर्स है, दे आर नॉट एबल टू गेट द इनफ फंड इन ऑर्डर टू ग्रो इन द मार्केट। तो हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं लैक कर रही है। तो यहाँ पर अब हम आईएमएफ का क्या इनपुट है हमारे लिए, तो वो ये कह रहे हैं दैट गवर्नमेंट शुड लोअर डाउन देयर लोन्स, उनको लोन्स और नहीं लेने चाहिए। पहली बात, दे शुड नॉट टेक मोर लोन्स, इंस्टेड दे शुड वर्क ऑन देयर टैक्सेस, कि वो किसी ना किसी तरह से अपने रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ाएं, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, इंड्यूस मोर एंड मोर प्राइवेट प्लेयर्स टू गेट इजी लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, ताकि हम आपकी जो इकोनॉमी है वो एक्सपैंड करे। एंड ऑब्वियसली अगेन इनके लिए भी सेम ही सजेशन है कि आप जितनी भी सब्सिडी दे रहे हैं, गिव द टारगेटेड सब्सिडीज इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द सब्सिडीज ऑल ओवर द नेशन। एक टारगेटेड सब्सिडी देंगे टू पुअर पीपल, ताकि आपका जो पुअर पीपल का जो सेक्टर है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। एट द सेम टाइम दिस इज फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर नेक्स्ट से 30-50 years. Okay, these are the certain things. Now comes your IMF global stable financial stability report. ठीक है, financial stability report, this is GFSR, Global Financial Stability Report. Again, this has been released by the IMF. What is the theme? Theme for April 2026 is Global Financial Market Confronts the War in Middle East and Amplification Risk. Okay, तो उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया या फिर क्या आइडेंटिफाई किया? सबसे पहले उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया that yes, there is a war in the Middle East and we have recognized that fact and we have understand what are the spillover effects of that war and what are the amplified risks that are there in the country or in the global economy that we are going to talk about. तो इसका बहुत ही छोटा सा हमारे पास फाइंडिंग्स हैं और रिस्क हैं। पहला है geopolitical and supply shock. Obviously there was a war like situation and because of war like situation the energy goods are getting expensive for the countries to buy. अब क्योंकि energy goods बहुत ज्यादा expensive है, because of which the countries are taking loan, or either they have a lot of deficit with themselves, right? Their bill payments are all time huge, imports bill भी इनके ज्यादा हैं, so it is very impactful for a poor countries और इमर्जिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए इट इज वेरी मच इफेक्टिंग। ठीक है, तो उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को टेस्ट कर रहा है ये वॉर, और अगर ये वॉर ज्यादा लंबे समय तक चलेगा, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द स्टॉक मार्केट एज वेल एंड दैट कुड परमानेंटली डैमेज द कंट्रीज एज वेल, स्पेशली द पुअर नेशन एज वेल। देन कम्स योर मार्केट वैल्यूएशन, जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड देयर रिस्पेक्टिव companies and their respective shares, their shares value are right now at all-time high because AI is being currently in demand, it is being currently in use, and many of the companies are getting high value for their equity shares, right? Now they are saying if there is a shock or there is a uncertainty in the market, these shares will come into their place, यानी कि ये जो बबल है, ये जो बहुत इंक्रीज हो गया है, that bubble will crack, ठीक है, वो बर्स्ट हो जाएगा और एट सम टाइम दीज प्राइसेस विल गो डाउन एंड डाउन। तो यहाँ पर एक डाउनफॉल रिस्क आ सकता है टू दीज एआई रिलेटेड शेयर्स। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर मार्केट वैल्यूएशन पर काम होना चाहिए, दैट आर दीज शेयर्स आर शोइंग देयर ट्रू वैल्यूज और नॉट। Then comes non-banking financial intermediation. Non-banking financial intermediations are the companies which are helping you move the money, जैसे कि हमारे स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, दे आर ऑल्सो टेकिंग योर मनी एंड मूविंग इट टू द स्टॉक मार्केट। जस्ट लाइक दैट वी हैव म्यूचुअल फंड कंपनीज भी क्या करती हैं, दे टेक द मनी फ्रॉम यू एंड दे आर हेल्पिंग यू टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड, राइट? सो दीज आर द न्यू non-bank financial intermediaries which are helping you moving the money instead of banks. तो RBI का तो पूरा कंट्रोल है बैंक्स के ऊपर and they can also control the movement of money as well, but these are very less regulated as compared to banks. तो यहाँ पर IMF का ये सजेशन है that see these banks and these intermediaries which are doing bank like services and moving the money from here to there,
they are possessing a lot of risk, and because they are possessing a lot of risk, their regulations is all time low. So we need to regulate it so that we can identify the early warning risk, राइट. अर्ली वार्निंग रिस्क जो है उनके हम कह सकते हैं सिग्नल्स जो हैं उन्हें हम पहले से ही देख सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें, एंड वी कैन कंट्रोल इट, राइट. सो वी आर recognizing a amplified risk that may arise in the upcoming future if we do not look at this particular area. Then comes debt and stability. Obviously हमारा debt गवर्नमेंट का और किसी भी हम कहें ग्लोबल इकोनॉमी में अभी भी ज्यादा है. So we need to focus on that we reduce our debt levels. ठीक है. और कहीं ना कहीं they are saying that equity bond hedging relationship जो है वो खराब हो रहा है. क्या कहना चाहते हैं ये? देखिए हमारा जो इक्विटी और बॉन्ड दो मार्केट में हम ब्रॉडली वो करते हैं, डिवाइड करते हैं. ठीक है. अपनी जो मार्केट होती है, राइट. एक बार समझ लेते हैं, इसे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है. सो बेसिकली इक्विटी एंड बॉन्ड, इस तरह से आपकी जो मार्केट है वो दो तरह से डिवाइडेड है. अगर हम इक्विटी की बात करें, जब आपकी इक्विटी में प्राइसेस हाई होते हैं तो बॉन्ड में आपके प्राइसेस कम होते हैं. एंड इसी तरह से व्हेन प्राइसेस इन द इक्विटी मार्केट आर लेस, इन द बॉन्ड मार्केट these are huge. So this is what? This is a balanced market. So if investor is losing here, they are gaining it from the debt market. Even if the investor is losing in the bond market, they are getting money in the equity market. So the market was balanced. पर वो कह रहे हैं अब ये जो बैलेंस है मार्केट्स के बीच में, दो डिफरेंट मार्केट्स के बीच में, दिस हैज बीन डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ हाई पब्लिक डेट. अब ये हाई पब्लिक डेट से क्या हो रहा है, एक बार इसे भी समझ लेते हैं. देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि पैसे उठाने शुरू करें, तो उन्होंने डेट रेज करने के लिए दे इशूड बॉन्ड्स. बॉन्ड्स ज्यादा इशू करें तो बॉन्ड्स की सप्लाई इंक्रीज हो गई. बॉन्ड्स की जब सप्लाई इंक्रीज हुई तो उनके प्राइसेस ड्रॉप हुए, और क्योंकि तो इनके प्राइसेस ड्रॉप हैं तो उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, यील्ड जो होगी इनकी, दैट विल इंक्रीज. सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप. अब गवर्नमेंट मार्केट यानी कि बॉन्ड मार्केट में प्राइसेस कैसे हैं, हाई हैं, और इक्विटी में भी अभी कैसे हैं, प्राइसेस हाई हैं. सो दे हैव ब्रेक दैट बैलेंस्ड ऑफ द मार्केट्स, राइट. सो ऑल दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. Just 1 second. Okay. Yes. अब ये हमारे पास न्यूज है विच इज SEBI DoT tie up for data sharing. So SEBI as a regulator of a stock market, they recognize that there is a lot of fake calls, scam messages, phishing links and what? Fake trading applications. And because of all these, the investors were getting hurt. ठीक है. इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना सेबी का काम है. दे आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स, राइट. तो अब उन्होंने क्या किया, दे हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अ अग्रीमेंट बिटवीन द DoT, that is Department of Telecommunication, and one is FIU India, which is Financial Intelligence Unit India. ठीक है. इन दोनों के साथ इन्होंने MOU साइन किया है. What is the agenda? The agenda is to fight the fraud, to share the data with the SEBI immediately, ताकि क्या हो कि हम इन्वेस्टर्स को सेव कर सकें. अब जब भी हम फेक मैसेजेस या फिर SMS की बात करते हैं, इट इज बीइंग डन थ्रू द टेलीकम्युनिकेशन. और जब जैसे ही सेबी का कलेक्शन या फिर कोलैबोरेशन हो जाएगा किसके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास, तो उनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन होगी दैट विल सेफगार्ड द इन्वेस्टर. ठीक है. तो इनकी जो कोलैबोरेशन है वो रिक्वायर्ड है बिकॉज ऑफ ऑल सच थिंग्स. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ telecommunication is the only network through which the cyber attacks are actually happening, or we can say the fake or fraud calls are actually happening. तो ये जो डेटा ट्रांसफर होगा that will be done by that. अब देखिए मैंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया
के साथ में क्या लिखा हुआ है, एगमॉन्ट ग्रुप प्रिंसिपल्स लिखा हुआ है। ये क्या मतलब है कि जब सेबी ने इनके साथ यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ अग्रीमेंट साइन किया, दे साइंड इट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एगमॉन्ट ग्रुप प्रिंसिपल्स। एगमॉन्ट एगमॉन्ट ग्रुप एक तरह का ग्रुप है जिन्होंने प्रिंसिपल्स लेट डाउन करे थे इन ऑर्डर टू हैव एन अग्रीमेंट विद द FIU, दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये प्रिंसिपल्स कहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, आपको डेटा और किसी के साथ नहीं शेयर करना, क्योंकि देखो सेबी एंड डीओटी एंड FIU व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। तो वो जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो भी सिक्योर्ड होना चाहिए, और जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करें दैट इज ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंशियल इन नेचर। तो यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ यही है सिंपल कि ये जो एगमॉन्ट ग्रुप ने प्रिंसिपल लेट डाउन करे हैं बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल विच वाज क्रिएटेड इन 1995, उसके अकॉर्डिंगली दे ऑल थ्री आर हैविंग अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पहला मेमोरेंडम फॉर अंडरस्टैंडिंग इन्होंने डीओटी के साथ किया है, और फॉर द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट दे आर टारगेटिंग द मनी लॉन्ड्रिंग विच इज हैपनिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन जो होती है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए दे आर हैविंग अ मनी MOU with the FIU. And for the domestic level of fraud which is happening through the telecommunication network, तो वो is being done with the DOU. तो DOT. So I hope you have understood the agenda here. ठीक है, MOU कब से start हुआ है? From April 15. It allows regular data sharing, coordination between the SEBI and the DOT, and faster action against fraud, so that they can safeguard the investor well in advance. इसका एक बहुत ही सिंपल सा वो है एग्जाम्पल है। मान लीजिए देयर इज एन इन्वेस्टर, उसको SMS आता है दैट अर्न 50,000 रुपीज जस्ट बाय क्लिकिंग दिस पर्टिकुलर लिंक। तो जो टेलीकम्युनिकेशन होगा दे कैन ट्रैक द पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ SMS एंड कैन रिपोर्ट डायरेक्टली टू द सेबी, एंड सेबी एट द सेम टाइम इज गेटिंग अ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। वहीं से वो इन्वेस्टर को हम कह सकते हैं एक डिस्क्लेमर दे देंगे दैट दिस कुड बी अ फेक कॉल और SMS, सो ट्राई नॉट क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक। तो ये बहुत ही फास्ट होगा काम। और कौन से प्लेटफॉर्म का यूज किया जाएगा? बाय द सेबी एंड द DOT, दिस इज बाय डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। क्या है ये? डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। दिस वाज डेवलप्ड बाय whom? द डिपार्टमेंट ऑफ telecommunication. This act as a platform wherein SEBI and DoT can share data sharing with each other. This has been collaborated by one AI tool which is being used to identify and block the fraudulent connection. इसमें चक्षु भी इन्वॉल्व है, बैकएंड पे चक्षु भी काम करता है। चक्षु क्या है? दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर द इंडिविजुअल्स कैन फाइल देयर कंप्लेंट रिगार्डिंग द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज और द फ्रॉडुलेंट केसेस, राइट। तो ये भी बैकएंड पे चलता है इसके साथ। तो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टूल। तो ये भी आप प्लेटफॉर्म के बारे में जरूर पढ़ के जाएंगे। दिस एनेबल्स रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन अमंग द एजेंसीज एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड पैटर्न्स। तो ये सब इसमें यूज हो रहा है। Let us come to the last news of this, which is SEBI amends the SSC framework. SSC stand for Social Stock Exchange. Social Stock Exchange ये भी एक तरह का नॉर्मल आपका स्टॉक एक्सचेंज ही है, जस्ट लाइक NSE, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या है? हाउ इट इज डिफरेंट? सो बेसिकली हियर द NGO companies and non-profit organizations are being generally listed, and they are using this particular exchange in order to raise funds from the public. So if individual or investor think that they want to increase their donation, they want to give any kind of charity towards the NGO and towards the non-profit organization in a transparent way, so they can buy the shares, or we can say any other thing which has been offered by this NGO in order to raise money. They can buy that and put their money or invest in that shares. ठीक है, तो ये इस तरह से चलता है हमारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सो सेबी हैज मेड टू इंपॉर्टेंट चेंज इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने दो इंपॉर्टेंट चेंज लेके आए हैं फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द NGOs। ठीक है, इसके साथ इन्होंने मार्च 2026 में भी क्या किया था? बहुत बड़ा चेंज किया था, विच इज इफ anybody, that is any investor that wants to invest in the social impact fund, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? किसी न किसी सोशल
प्रोजेक्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी सोशल इम्पैक्ट फंड. दैट इज द फंड विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द सोशल इम्पैक्ट. इन्वायरमेंट के लिए, चाहे आप ट्रीज लगा रहे हैं, चाहे आप मशीनरीज लगा रहे हैं विच आर गोइंग टू वर्क फॉर द एयर पॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह से कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं. तो पहले जो इन्वेस्टमेंट थी वो 2 लाख से कम नहीं हो सकती थी. 2 लाख वॉज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट, बट नाउ दिस हैज बीन decreased it to 1000 rupees. So our retail investors can also participate in this particular thing. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था, तो ये आपको याद रखना है along with the changes that we are going to discuss in a upcoming slide. तो एक तो ये चेंज है जो कि मार्च 2026 में हुआ था, ठीक है. इसके अलावा 2 मेन चेंजेस हैं, तो ये आप मेरे साथ पढ़ेंगे. द फर्स्ट इज एक्सटेंडेड द रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी. देखिए, जब भी एक कंपनी या फिर एनपीओ या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनजीओ रजिस्टर करवाती है अपने आप को सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे, देयर इज अ पर्टिकुलर टाइमलाइन फॉर विच दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द एसएससी. जैसे कि पहले इन्हें सिर्फ 2 साल दिए जाते थे. इफ यू हैव मेड अ रजिस्ट्रेशन, तो आपकी वो रजिस्ट्रेशन 2 साल तक वैलिड रहेगी. इन दैट पर्टिकुलर टाइमलाइन यू कैन रेज द फंड, पर ये टाइमलाइन बहुत कम थी. whenever a NPO is thinking of getting themselves registered with the SSC, ठीक है, तो इट्स नॉट वी कैन से मैंडेटरी कि वो 2 साल के अंदर अंदर ही फंड रेज कर पाए, क्योंकि एनजीओ को अगर पैसा रेज करना है तो उसके पास एक प्रोजेक्ट भी तो होना चाहिए. मान लीजिए ये 2 साल का टाइम उसके लिए बहुत कम है टू डिसाइड दैट हाउ मच फंड दे वांट टू रेज, राइट. तो अब क्या किया है सेबी ने, दैट दे हैव एक्सटेंडेड द टाइमलाइन टू 3 years. वो कह रहे हैं आपको हम 2+1 यानी कि 3 years का हम आपको रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी दे रहे हैं. वंस यू हैव रजिस्टर्ड विद अस, यू हैव 3 years ऑफ टाइम टू थिंक दैट फॉर व्हाट एंड हाउ मच फंड रेज यू हैव टू डू एज अ एनजीओ एंड अ एनपीओ, ठीक है. तो इससे क्या होगा, जो प्रैक्टिकल डिलेज हो रहे थे इन द स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी अप्रूवल, उनको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा. इसके साथ साथ दे हैव वन मोर एक्सटेंशन ईयर वेर इन दे कैन सीक द अप्रूवल फ्रॉम द एसएससी फॉर द फंड रेजर, राइट. तो इनको यहाँ पर एक ये रिलैक्सेशन करिए. तो आपको क्या याद रखना है, 2 से 3 years कर दिया है अब इन्होंने. फिर बात करते हैं लोअर मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर द जीसीजीपी इंस्ट्रूमेंट. जीसीजीपी होते हैं जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स. जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड. अब इसका नाम क्या है, जीरो कूपन, यानी कि आपको जीरो कूपन मिलेगा, कोई आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ना ही परसेंटेज में, ना ही वैल्यू में, ना ही आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा. फिक्स्ड कम कुछ नहीं मिलेगा, आपको 0 rupees मिलेंगे इन रिटर्न इफ यू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर बॉन्ड. आगे क्या बोल रहा है, 0 प्रिंसिपल, यानी कि आपको प्रिंसिपल भी नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. वट यू आर डूइंग अ चैरिटी, यू आर डूइंग अ डोनेशन. तो डोनेशन में जब भी हम करते हैं उसमें हम रिटर्न नहीं करते. तो जीसीजीपीज आर बॉन्ड्स लाइक दैट वेर इन यू आर डूइंग donation and you are not expecting anything in return, not even a principal, not even a return. Suppose एक कंपनी है, उनका प्रोजेक्ट है कि हम पूरे इंडिया में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे. So you are giving donation to them ताकि वो अच्छे से काम कर पाए इन इंडिया. तो you are not expecting any return on that, ठीक है. तो पहले मान लीजिए इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर एनपीओ ने मान लीजिए 100 करोड़ रेज करे हैं फ्रॉम जीसीजीपी, ठीक है, उन्होंने इश्यू करे ये बॉन्ड्स और उन्होंने 100 करोड़ सीख किए. पर पता इन्वेस्टमेंट कितने की आई, यानी कि लोगों ने कितने खरीदे ये जीसीजीपी. तो ये 75% आए, यानी कि 75 करोड़ आए इनके बदले में, ठीक है. तो अगर इससे कम आ जाते थे, मान लीजिए 74 करोड़ आ गए या फिर 70 करोड़ आ गए, तो 75 से कम है, 75% नहीं आए पूरे, 75% से आपको कम मिले हैं, देन वी आर गोइंग टू से कि आपको ये सारा सब्सक्राइब्ड अमाउंट, यानी कि जितने भी आपको पैसे मिले हैं 74 और 70 करोड़, ये आपको वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जो सब्सक्रिप्शन मिली है वो इतनी अच्छी नहीं मिली फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. सो यू हैव टू गिव दैट मनी अगेन बैक टू द इन्वेस्टर्स. आप वापस रिफंड कर दीजिए, ठीक है. अब इन्होंने ये लिमिट चेंज कर दी है. इन्होंने कहा दैट कोई बात नहीं, अगर आपने 100 करोड़ रेस करें, वट एवर द केसेस, आपने जितने पैसे भी रेस करें, अगर आपको उसका 50% सब्सक्रिप्शन भी मिलता है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, यानी कि अगर आपको 50 करोड़ भी सामने से इन्वेस्टमेंट आ रही है, देन यू कैन एक्सेप्ट इट.
तो अब इन्होंने रेंज जो से पहले 75% थी वो इन्होंने रेंज चेंज करके 50% कर दी है, यानी कि अब उन्हें रिफंड नहीं करना पड़ेगा पैसा। अगर उन्हें 70 भी मिल रहा है, 50 भी मिल रहा है, अगर 50 से कम मिल रहा है, यानी कि 40% मिल रहा है, 30% मिल रहा है आउट ऑफ द 100 करोड़, है ना, 100% जितना भी रेस करना चाह रहे हैं, देन दे हैव टू रिफंड इट बैक टू द इन्वेस्टर्स, कि आप वापस कर दीजिए, इतने में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा जिसके लिए आपको पैसे चाहिए थे। ठीक है, अगेन इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? दैट प्रोजेक्ट शुड बी यूनिट बेस्ड। वो प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए? यूनिट बेस्ड होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने क्या प्रोजेक्ट किया कि 10,000 करोड़ हम पेड़ लगाएंगे थ्रू आउट द अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द नेशन। अब पैसे कम आए, आपको 100 करोड़ चाहिए थे, आपको 50 करोड़ आए, तो 50 करोड़ में 10,000 करोड़ तो नहीं लग पाएंगे, चलो 5,000 करोड़ तो लग जाएंगे पेड़, तो 50 करोड़ कैन बी यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब क्या है? अब क्या है, आपने यूनिट कम कर दी। सो इट्स अ यूनिट बेस्ड प्रोजेक्ट, तो आपने यूनिट कम कर दी, इतने से हो जाएगा आपका काम, राइट। अगर कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, मान लो आपको एक सोलर सिस्टम को कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, उसके लिए आपको चाहिए 100 करोड़, उससे नीचे हो ही नहीं सकता, राइट। तो यू कैन नॉट, इट इज नॉट अ यूनिट बेस्ड, है ना। तो अगेन दैट इज द कंडीशन। एक बार देख लेते हैं। सो दे आर सेइंग द अप्लाइज ओनली टू द प्रोजेक्ट वेयर द कॉस्ट एंड द आउटकम्स can be clearly identified based on per unit basis, and SSC must conduct the due diligence to confirm that fund are raised at the lower threshold। ठीक है, उनको देखना पड़ेगा एसएससी वालों को कि भाई लोअर थ्रेशोल्ड में है कि नहीं है, एंड दे आर बीइंग मीनिंगफुली डिप्लॉयड। अगर उन्होंने उठाए भी हैं पैसे विद दिस 50% थ्रेशोल्ड, तो उन्होंने लगाए भी हैं पैसे, डिप्लॉयड भी अच्छे से किया है। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट मेंट, द फंड मस्ट बी रिफंडेड टू द इन्वेस्टर्स। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुई है तो इन्वेस्टर को रिफंड करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं आपके डाउट। डू यू हैव एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? Because now we are going to discuss the questions. Yes. देखिए रोहित, बी रिस्पेक्टफुल टू योर टीचर्स। ये जो आपने गुड इवनिंग करके लिखा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर नेक्स्ट टाइम से आपका इसी तरह से आया तो आई एम गोइंग टू ब्लॉक यू फ्रॉम द लाइव चैट। बी रिस्पेक्टफुल फॉर योर टीचर्स। ठीक है, अगर वो रिस्पेक्ट नहीं आएगी तो आई एम रियली सॉरी, यू विल वॉन्ट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एग्जामिनेशन डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ एक रिस्पेक्टफुल इंसान भी मांगता है, एंड दैट कैन बी सीन इन द इंटरव्यू एज वेल बाय द इंटरव्यूअर्स। ठीक है, तो वो सब चीजें देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what was the global gross public debt as a percentage of GDP in 2025 according to the IMF fiscal monitor? Yes, what do you think is the right answer? देखिए, if you are not going to participate in these easy questions, then it would be very difficult for you to understand, right? Tell me, what do you think is the right answer in this case? This is a very easy question. Or maybe I am not able to see your comments. Wait for a second. Okay, let me tell you the answer. So
C is the 94% is the right answer. Question number 2. What is the new validity period for the NPO registration on social stock exchange? So it is 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year. So the right answer is 3 years, right? What is the revised minimum subscription requirement for zero coupon, zero principal instruments under the certain projects? So if you are watching this a recorded session, what you can do is you can simply wait, pause the video, and then you can mark the answer, because ultimately I'm going to tell you the answer, otherwise it is going to be very difficult for you to get the right answer. Okay, and obviously you can participate. I can't see your comments at all in the live chat, so let's just okay. So for the zero coupon, zero bond instruments, what is the now the minimum subscription required? It is 50% only. 50% only. Very basic question, very easy, direct question. Question number 4. Which government department partnered with the SEBI for this initiative? So Ministry of Finance, Department of Telecommunication, Ministry of Corporate Affairs, Reserve of Bank of India, Ministry of Commerce. So again, this is very simple for you to understand. You can answer it that yes, DOT is the right answer. This is my Telegram group. You can follow this Telegram group if in case you need any kind of guidance from me. Users have this access that they can communicate with me, and I want you to use this space efficiently and for the use of it. That means if you have any kind of doubt with the regulatory body examination, koi bhi guidance chahiye, that you can take it, right? And this is the master kit. You can get a link in the description below, and that if you fill that Google form, you will be able to access this PDFs, right? So I hope this is a fruitful session for all of you. And in case you have any doubt, you can tell me in the comment section, right? And I'm going to tell you with that. Okay. Goodbye, everyone. Take care of yourself, and